Hello bachcha, let us do this question. So your question says that is the function f defined by f of x is equals to greatest integer function of x continuous at x is equals to 1 by 2 or not. So इस क्वेश्चन को करने के लिए the key concept that we are going to use here is, see देखो, either a function f of x to be continuous, okay, to be continuous, its left hand limit should be equal to right hand limit should be equal to its functional value f of x. For suppose if a function, if we are, अगर हम a जो भी फंक्शन दिया है उसका कंटिन्यूटी एट पॉइंट a पे चेक किया तो उसका फंक्शन वैल्यू भी इक्वल होना है. दिस इज द की कॉन्सेप्ट दैट वी आर अप्लाइंग हियर. So now moving forward to solution part. Here the given function is what? Here the given function is f of x और वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. तो इसका देखें तो इधर this can also be written as f of x is equals to greatest integer function is equals to, so इधर देखो, अगर if x is less than 1 by 2, okay, if x is less than 1 by 2, then in this case it's going to be what here, it is going to be 0, right? For suppose if it is in between 0 and 1 by 2, okay, if it is in 0 and 1 by 2, in this case now the greatest integer function will take 0 only, okay, when x is greater than 1 by 2, okay, when x is greater than 1 by 2 and less than 1, so in this case now it is going to take what here, still it will going to take 0 only. So when x is equals to 1 by 2, in this case also it's going to be 0 only, because here the 1.1 by 2 gives us what, 0.5. since the greatest integer function will always take integer only, so जो भी होगा वो इंटीजर ही लेगा इधर, ओके, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है इधर एलिमिनेट हो जाएगा. सो इसके हिसाब से इधर देखो, जब x जो है वो 0 को और 1 by 2 के बीच में है तो वो 0 ही लेगा, बिकॉज द इंटीजर वैल्यू ओनली इट विल टेक. सो देखो 1 by 2 और 1 के बीच में है तो वो 0 ही लेगा, एंड एग्जैक्टली एट 1 by 2 में है तो भी 0 ही होगा, राइट? सो इधर से हम क्या बोल सकते हैं, इधर से द लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, the left hand limit, that is limit x is tending to 1 by 2 minus f of x जो है, so इसका क्या होगा, limit x is tending to 1 by 2 minus इसका वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 ही हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट देखो राइट हैंड लिमिट चेक किया तो, ओके, इफ यू चेक फॉर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x is tending to 1 by 2 plus f of x, so इस केस में क्या होगा, लिमिट x is tending to 1 by 2 प्लस, इधर भी 0 ही होगा तो RHL भी 0 ही आएगा. सो नेक्स्ट देखो f ऑफ 0 के वैल्यू, राइट, सॉरी, f ऑफ 1 by 2 चेक किया तो फंक्शनल वैल्यू अभी f ऑफ 1 by 2 चेक किया तो a क्या हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा. सो इधर से हम क्या बोल सकते हैं, इधर सिंस, देयरफॉर सिंस लिमिट x is tending to 1 by 2 minus f of x is equals to limit x tending to 1 by 2 plus f of x is equals to functional value f of 1 by 2. Since all of them are equal, so इधर से क्या बोल सकते हैं, therefore f of x is equals to greatest integer function is continuous, okay, is continuous at x is equals to 1 by 2, यही बोल सकते हैं ना. So this is the answer for the given question. I hope this understood you well. Thank you so much. All the best.